Hello and welcome back to the another video. Today we discuss today POTD problem of LeetCode. Actually, it is a good problem and little bit tricky problem, but I don't think it will be in the medium category. It will be in easy category. The problem is that make a string subsequence using cyclic increment. Let's understand what the problem want to tell. The problem is that we have given a zero index space string str1 and str2, and in the operation we can perform one operation, like we can select a set of indices from str1 and each index I in set increment by 1, and that increment should be in like cyclic order. For example, if it is a, then we can increment to b, means we can increment by 1. A goes to b goes to c goes to d, dot dot dot. If if element is z, then it will go to a. That is the meaning of cyclic. So we need to find if str1 have any subsequence after performing this operations. If str1 have a subsequence which is matched with the str2, then we need to return true. Otherwise, if it is not possible, then we need to return false. So as we know the first example, str1 is given as a abc and str2 is given as a ad. Okay, so a matches with a. If a matches with a, we no need to increment it. Okay, after that we move to the b and we check b can be possible with d. We have only one operation, we can perform only one time, at most one time for a single element, for an element. Okay, b, if I perform operation on b, we move to c, means that from at the place of second index, first index of str1, we have a two option. Either we go to b, either we go to c. But in str2, at the place of second, we require d, but with the help of b we can form b or c. So we can neglect b from our subsequence. If I form a subsequence, if b it is not required as my required question, as my answer, if b is not required, because b हमें कुछ देने वाला नहीं है. b से तो b जा सकते हैं या c जा सकते हैं, तो b तो हमें कुछ देने वाला नहीं है, तो b हमें रिक्वायरमेंट में आएगा ही नहीं. वो हमें सब्सिक्वेंस में इसका कोई मतलब ही नहीं था, उसे हम हटा देंगे. सिंपल सी बात है ना. और फिर हम नेक्स्ट आइटरेशन में जाएंगे c के पास. c के पास जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सोचो. सी के पास जाएंगे तो या तो सी होगा या तो डी होगा ना. तो सी होगा या डी होगा. दैट मीन्स if we can increment c as a d, then it means not it means if it is d, then it will matches to the second element, we can say the second first index of str2, it is matches with that. And if we can form with that, that means we have we have a subsequence who generate str2. Okay, so let little bit more more. यार सिंपल सी बात है, हमें और थोड़ा एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं. ओके, example is that let we need to form a b c d e. Okay, that is the str1. Okay, and str2 is we like I need to find from this one. I think I just I need to find ad. So as we know, this is index 0. I think if I write in 1 2 3 2 3 and 4. सो यार देखो, जब हम जीरो इंडेक्स पे हैं तो हमने देखा कि str1 और str2 दोनों मैच हो रहे हैं, a इज मैच्ड. तो हम इसे क्या करेंगे अपने सब्सिक्वेंस में, लाइक अगर हम सब्सिक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं तो हम उसमें इसको इंक्लूड करेंगे. फिर हम नेक्स्ट गए तो हमें b मिला. b से हम या तो b बना सकते हैं या तो d बना सकते हैं. तो either I can take it or not take it. If so here we can take, why we can take this one if it is not required. We cannot with the help of b we cannot make a d. Then why we need to use as an answer, no na. So I just neglect d. After that I pointer move to 2. Basically I iterate on the str1. a के बाद b के पास गए, b के पास c के पास गए. c के पास गए तो हमें क्या मिला, c से क्या बना सकते हैं, या तो c खुद बन सकता है या तो d बना सकते हैं.
तो सी से सी बना के देखा तो डी नॉट मैच्ड, सी से डी बना के देखा तो इस मैच कर गया यार। मैच कर गया मतलब कि हम इसे बी रख सकते हैं। हमने बी को हटा दिया, ए और सी रखा। उसके बाद देखा कि str2 तो फॉर्म हो गया ना, str2 तो हमारा फॉर्म हो गया। इफ str2 इज फॉर्म आफ्टर लाइक इफ आई यूज till here with the help of abc, if I can form a ad, तो इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स वो हमारे काम के हैं नहीं काम के हैं तो हम अपने उसके सब्सिक्वेंस में रखेंगे नहीं, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा str2 फॉर्म हो जाता है तो हम वही रिटर्न कर देंगे ट्रू। ओके, और एक बस सिंपल सा करना है, जैसे ही मैं कोड लिखूंगा आप समझ जाएंगे क्या करना है। और एक ट्रिकी चीज एक और है यहाँ पे, वो डेट इज हाउ टू कन्वर्ट, लाइक इफ दिस वन इज जेड एंड we need to here a we need to form str2 as a aa. So first index is matched with b is not responsible to make a, also c, also d and z. When we come to z, then what will happen? It's in the question it's properly said it, it may it not may, it's cyclic, it's a cyclic that means z में +1 करेंगे तो हम a के पास जाएंगे, मतलब z से हमें a हम क्रिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, बट हाउ ये सब चीज़ें चलेंगी कैसे, हम z को a में कैसे पता करेंगे, ये ट्रिकी पार्ट है। तो हमें कन्वर्ट कर रहा है a को b में, b को c में करना है ना, और इसी तरह करते करते हमें z को क्या करना है, z को फाइनली हमें d में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यार बेसिकली what do you think, how you think that बेसिकली कैसे करेंगे ना यार, सोचो कैसे करेंगे। तो हम कर क्या सकते हैं, हम कर सकते हैं कि हमें पता है कि str(i) हमें कुछ देगा, ABCD देगा। अगर उसमें से मैं a माइनस कर देता हूँ कैरेक्टर a, तो हमें क्या देगा, लाइक str(i) इज a है, a में से हमने a को माइनस कर दिया तो इट विल गिव 0। इफ this one is b then it will give 1. Okay, or if it is z then it will give 26, but actually 26 have a no sense. Okay, there is a no sense of 26. If we modular with 26 then it will give 0 and we know 0 is represent a. Okay, तो इतना तो हमें आइडिया लग गया कि हमको क्या करना है, ये पार्ट करना है और इसमें हमें a+1 करके इंक्रीमेंट करना है। Sorry, it will not give 26, it will z minus a will gives 25, when I +1 then it will give 26, and +1 gives 26 means this will gives us a, हमें a देगा ये, और हमें ये टोटल जो वैल्यू होगी वो 26 आएगी। तो अगर हम इसे 26 से मॉडुलर करते हैं तो 0 आएगा, that will show the a. Okay, I think you understand. So that means we have to for this equation we also need to परफॉर्म मॉड्यूलर विथ 26। ओके, तो इतना तो कर देगा यार। उसके बाद क्या होगा, देन इट विल गिव्स 0 1 2 3 डॉट डॉट 26, बट वी नीड एज अ स्काई वैल्यू वी नीड 90 97 98। तो आई एम सिंपली एड ए अगेन विथ दिस वन, एंड फॉर converting this to character I just write char. Okay, so I use this equation, so I just cut it. Let's try to code it. So yeah, let I use one variable for iterating the string 2 and one for loop for iterating the string 1. नाउ आई एम जस्ट चेकिंग व्हाट चेक, क्या करेंगे चेक, सिंपल सी बात है, हमें क्या चेक करना था कि अगर str(i) इज मैच्ड विद व्हाट str of 2j। मैं तो वहाँ स्ट्रिंग भी फॉर्म कर रहा था, बट हमें रिक्वायर्ड जब है नहीं रिक्वायर्ड हमें स्ट्रिंग देने की, हमें तो ट्रू फॉल्स देना है, हमें तो कोई मतलब नहीं है वो सब्सिक्वेंस का, हमें ट्रू फॉल्स देना है। तो हम सिंपली यहाँ पे j++ कर देंगे, बिकॉज वी फाउंड आउट वन एलिमेंट इज मैच विथ any element of the str1. If it is happen I'm just increase the str2 because we found out okay. And next one is
Next one is it first if condition is for what? That is for if it is mass width without increment, then it's okay. And next one I need to check what if this one is equals to str to j, then I need to increment j plus plus. Okay. And how we know that str2 is formed? Of course, if all string is iterate in str2, if all the elements in str2 is iterate, अगर सारी iterate हो चुकी हैं, that means कि वो form हो चुका है. तो that time j is pointed to the last index. Last means after the last index. That means that will so j is pointed to the size of the str2. I just check every time if str2 j is equals to str2. That means we have to return true because we form it. But there is a condition like in the second case. In second case, we can see that there is given a ZC and AD. I is pointed to here, J is pointed to here. Z converted to A, then both will move to next one, and C converted to D, then both will move to next one. When both will move to next one, when I is after C and I is after C, then the for loop is break and it will not check this condition. That means I need to check one after the also after the what for loop. If it is happened, then I need to return true, otherwise I return false. So let's try to submit it. I just missed, yes, that is str1. So we passes the all test case. Okay, I will try to submit it. Yes, okay. So yeah, what is the time complexity and space complexity of the given code? As we seen that we just iterate one time the str1. That means what? We take only order of n. So that means time complexity is the order of n, and we cannot use any extra variable, and that's all. That the space complexity will be the order of 1. So yeah, I hope you understand. Thanks for the watching. Keep learning and keep growing.